कोर कार्ड। Yeah. ठीक है, अब आपको कोर कार्ड के साथ क्या करना है, दैट इट्स नॉट जस्ट द मेजर आर्कना व्हिच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट हियर, वी विल आल्सो टॉक अबाउट, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि एक ही कार्ड की एनर्जी आपको रूल करेगी थ्रू आउट द लाइफ, बट ये है कि 8 नंबर की फैमिली रहेगी। ठीक है, तो 8 नंबर, जैसे आपके केस में 3 नंबर हो गया, तो 3 नंबर Yes. योर रूलिंग नंबर। तो इन दिस केस यू विल कनेक्ट इट फर्स्ट टू द कोर कार्ड। ठीक है, तो कोर कार्ड तो ले लीजिए, उसके अलावा ना हम लोग इसको पिप कार्ड से भी करेंगे। Okay. पिप कार्ड का मतलब हो गया कि अगर आपका 3 आया है तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप, Three of Pentacles. ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये Three of तीन कार्ड, Swords. 4 कार्ड जो है अपने आसपास रख लो, क्योंकि यू हैव टू बिहेव लाइक दीज पर्टिकुलर कार्ड मैसेजेस, Yes. because at different times, you know, minor arcana deals with more our daily life, Four. right? It's more Yes. about our day to day life, and you know, very like humans as people, what kind of decisions we need to take, so in our relationships, in our professional life, so this is how you need to behave. 3 ऑफ वॉन्ड, तो प्रोफेशनल मैटर्स हो गए या जहाँ पे भी आपको फायर एनर्जी की जरूरत होगी, वहां पर आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स विल बी गाइडिंग यू. So in a way it's a guidance card also, and in a way it's a prediction card also, because Okay. 3 of wands aa gaya, so it is a card about super achievement, right? And you can also say how 3 of cups is telling you that you need to form creative teams, you need to find people who are of same profession as you, same taste as you, so that will help you. जैसे जैसे आप पार्टनरशिप्स बनाओगे वैसी वैसी आप करियर में अपने और ऊंचा Okay. जा सकते हो, है ना? 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी कार्ड यही है कि आप अपने टैलेंट पे कंटिन्यूअसली काम करते रहिए, जिससे कि आपको उसके पेटर्न्स मिल सकें. And 3 of swords is also, it might be that in some parts of life or phases of life, you might have something which is emotionally very disappointing, but at the same time, it will help you to gain major lessons about human nature and how to cope with misery. Okay, so 3 of swords का कार्ड हम हमेशा लर्निंग की तरह लेते हैं. Learning की तरह. लर्निंग की तरह ही लीजिए उसको, क्योंकि 3 में हमेशा कोई ना कोई चीज ग्रो करती है. ठीक है ना, जब भी 3 नंबर आएगा फ्लिप कार्ड में तो हमेशा ग्रोथ होगी. Growth. तो ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हो वो आपको बहुत बिट्रे कर जाए, या आपसे किसी ने कोई प्रॉमिस किया है प्रोफेशनल या बिजनेस, और वो उसके कमिटमेंट को ना रखें, तो आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हो सकता है, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है बहुत सेंसिटिव एनर्जी है. दैट मीन्स कि आप और आपके हस्बैंड दोनों की नेचर बहुत सेंसिटिव रहेगी. आप लोग लोगों को बहुत पसंद करते हो, चाहते हो कि लोग आपके साथ मिले जुले, मतलब बोथ ऑफ यू आर people's, you know, you like having people around you, you are people lovers. Yeah. So somewhere you have to take into account कि अगर दर्द मिलता है लोगों से, तो फिर उसको किस तरीके से आपने जो है वो प्रोसेस करना है उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है ना, उसको अपने दिल पे ज्यादा दिन तक हावी नहीं रहना. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 के जो पिप कार्ड्स हैं आपके, वो भी आप लेके चलोगे चारों, तो ये अपने लेके चलो, ऊपर अपना कोर कार्ड रखो और नीचे अपने पिप कार्ड रखो. ठीक है, Okay. फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि एम्प्रेस के साथ आपका कौन सा साइन या प्लैनेट एसोसिएटेड है. ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. हाँ, तो इस केस में आपका ज़ोडिएक के ये वाला जैसे साइन हो गया, तो आपका कौन सा है, आपका हो गया वीनस. तो वीनस से रिलेटेड आप जो है वो, लॉर्ड क्या है वीनस का, मतलब अगर साइन होता है तो लॉर्ड होता है, आपका तो प्लैनेट ही है. और वीनस का आप उपाय कर सकते हो. ठीक है, तो वीनस से रिलेटेड आपकी जो भी रेमेडीज हैं आप उसको थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज ये तो गाइडिंग आपका कोर कार्ड है, गाइडेंस कर रहा है पूरे जिंदगी. तो ये भी एक तरीका बन जाता है लॉर्ड ऑफ द ज़ोडिएक साइन. अब जैसे आपकी बेटी का नंबर 8 है, तो 8 के लिए स्ट्रेंथ कार्ड के लिए हमारा लियो साइन है. तो लियो के लिए सूर्य होता है जो रिजाइडिंग प्लैनेट होता है ना, लॉर्ड ऑफ द ज़ोडिएक साइन. ठीक है, तो लियो के लिए हमारे को क्या होता है, सन होता है. इसमें आप सन गॉड से रिलेटेड उपाय कर सकते हो. तो आप देखो कि इस तरीके से जब हम रिलेट, ये सब हमें लेवल 1 में नहीं पता चला था, नहीं चला, ये सारी चीजें लेवल 2 में पता चलती है, बिकॉज हम लोग उनको अब एस्ट्रोलॉजी के साथ, रेमेडीज के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं. तो जब आप किसी क्लाइंट को, किसी पर्सन को, सपोज आपके पास कोई मैच मेकिंग के लिए आया है, व्हाट डज माय लवर थिंक अबाउट मी, कॉमन क्वेश्चन है कि आई एम इन अ रिलेशनशिप लास्ट 3-4 years, आई वांट टू नो व्हाट माय लवर थिंक्स अबाउट मी, इज ही गोइंग टू प्रपोज मैरिज.
ये एक बड़ा कॉमन, बड़ा यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है जो आएगा आपके पास। अब उस केस के अंदर आप सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड कर सकते हो। देखो ना, आप क्या क्या कर सकते हो। आप सिंपल 3 कार्ड 5 कार्ड रीडिंग तो कर ही सकते हो। उसके अलावा आप पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए सेल्टिक क्रॉस कर सकते हो। आप उसको, अगर उसको बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड के का नहीं समझ में आ रहा प्रोफाइल, यू कैन डू एन एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट मैन। उसका एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल कीजिए, आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है ना। उसके डेट ऑफ बर्थ से उसकी और पर्सनालिटी कार्ड निकालिए, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा क्या उसकी एनर्जीज है, ठीक है। और लड़की का जैसे जो आई है आपके पास, उनका आप निकालिए, और उसके अंदर उनका जो ज़ोडिएक साइन का जो भी लॉर्ड आता है, उससे रिलेटेड आप उनको रेमेडीज बताओ, बताओ, मंत्र जाप बताओ, सारी चीजें। और हमारी जो सेकंड बुक है वो है ही सारी की सारी हमारी रेमेडीज के ऊपर। ये वाली जो बुक है, यस मैम, आई लव इट। रेमेडीज पे है, ठीक है ना। तो प्लैनेट से कनेक्टेड भी इसमें रेमेडीज दी हुई हैं सारी। आपको रुद्राक्ष पता है, आपको मंत्र पता है, आपको यंत्र पता है, तो ये सारी चीजें मैं लूंगी। इस पे भी सेशन आपका क्लास रहेगी, एक सेशन where I'll just guide you through all the remedies. But basically it's all here, and what is important is to know कि कौन से प्लैनेट की रेमेडीज देनी है, ठीक है। प्लैनेट आइडेंटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सब लोग सारे स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि कौन से प्लैनेट की देनी है। Rachita, but it's all about karma now. If we suffer, you know, some people struggle a lot, and it's a struggle a lot. Yes, and they always struggle in their life. So if they go to tarot card reader, how to interpret this? You have to do, see, the struggle can be due to many reasons. It can be financial struggle. It can be that they don't have success in relationships. In life. Okay. So generally, in such a case, you should do a Celtic cross spread. It is the best. If you want to see on the entire of the person's whole life view, you want to get. Keep the question in mind that this person is not getting success like they like, and they are struggling a lot. What is the reason? What is the cross which is happening? And again, in the Celtic cross, we have prediction cards, we have tarot guidance cards, we have immediate past, future, root, top of the mind. All these cards will give you information about where that person is stuck, where is the blockage. Okay. But it can all be based on karma, no? It is always based on karma. Yes, it is primarily based on destiny also, because if a person is struggling in life, it means that there is some kind of a backlog or some kind of previous karmas which are right now punishing that person. So if that person understands what is the right karma now, he can help to settle, or he can help to cancel those negative karmas of the past. Positive karmas of present will help him to cancel the negative karmas of the past. Okay, it's a simple arithmetic game actually. That's why it's called a karmic account. So the more he does that, more he will be able to cancel it. And after that, you can give remedies also, spiritual remedies also, that will help him. Also, Jyotsna, you need to find out what is the person struggling in. If it's more to do with finance and career, then I would suggest do spreads which are focused on that. I mean, give that person concrete advice. You know, maybe the career choice is wrong. Okay, maybe they are not in the right career. Maybe they are not satisfied with the organization they are working in. Why are they struggling? Maybe their family bonds are very strong. They should move away from the family and live independently. Lots of things are there. Why is the struggle there? You have to ask what part of you do you find that you are struggling in. Sometimes it happens, girl wants to get married, and last many years they have been seeing proposals, you know, like, I'm struggling to get married, I don't know when it will happen, I'm struggling to get a good position in life, I'm struggling to move abroad, I don't like it here in this country. So where is the struggle? In whenever you do a tarot card spread or a tarot card reading session, it is very important to talk with your client. Talk and get specific questions. Again, I'll come back to, because what is the struggle about is also a question.
Like for example, if the question is, just give me a minute, let me just get